हेलो यूट्यूब, वेलकम टू डॉक्टर माइंड्स लर्निंग पॉइंट। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मेकल्स डाइवर्टिकुलम के बारे में। ध्यान से देखो, सब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सो दिस वीडियो विल स्टडी अबाउट द मेकल्स डाइवर्टिकुलम। सबसे पहले आप जानना चाहिए आपको कि मेकल्स डाइवर्टिकुलम होता क्या है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मेकल्स डाइवर्टिकुलम, दैट दिस इज अ कॉन्जेनाइटल डाइवर्टिकुलम प्रेजेंट एट द टर्मिनल पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। ठीक है। सेकंड, मेकल्स डाइवर्टिकुलम हुआ ही क्यों, फॉर्मेशन क्यों हुआ? फॉर्मेशन इसलिए हुआ बिकॉज देयर इज द प्रेजेंस ऑफ प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द अनऑब्लिटरेटेड विट्रियल इंटेस्टिनल डक्ट। प्रॉक्सिमल अनऑब्लिटरेटेड पोर्शन ऑफ द विट्रियल इंटेस्टिनल डक्ट के प्रेजेंस की वजह से मेकल्स डाइवर्टिकुलम हुआ। ठीक है। मेकल्स डाइवर्टिकुलम, इज इट अ ट्रू डाइवर्टिकुलम और फॉल्स डाइवर्टिकुलम? Sir, it is a true diverticulum. Why do you say true diverticulum? Because it contains all the three layers of the intestine. Plus, it is having its own blood supply. So all the cores of the intestine are present and they have their own blood supply. So what is the blood supply of Meckel's diverticulum? Sir, it is superior mesenteric artery. What is the branch of superior mesenteric artery? Or superior mesenteric artery is a branch of which artery? That is a homework to you. You will comment in the section below कि superior mesenteric artery is a branch of which artery. Okay, next. हमें जानना है मेकल्स डाइवर्टिकुलम क्या है, मेकल्स डाइवर्टिकुलम होता क्यों है, और एक ट्रू डाइवर्टिकुलम क्यों है मेकल्स डाइवर्टिकुलम। देन द सर्टेन फीचर्स ऑफ मेकल्स डाइवर्टिकुलम व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज गिवन बाय द रूल ऑफ 2. So it is present in 2% of the population. It is 2 feet from the ileocecal valve. It is 2 inches long and it is 2 times more common in men than in females. So this is the rule of 2 in Meckel's diverticulum. Now there is a special peculiar feature of the mucous membrane of Meckel's diverticulum. तो इलियम का जो एपिथेलियम है, Meckel's diverticulum is also lined with the similar epithelium of ileum. And what are the contents of Meckel's diverticulum? क्योंकि diverticle है, आउटवाउचिंग है तो कुछ कंटेंट्स होना चाहिए. So content is hypertrophic gastric mucosa. It can be duodenum, it can be colonic, and it can also be pancreatic tissue. ये इंपॉर्टेंट है इसलिए जानना बिकॉज जो कंटेंट होता है उसके अकॉर्डिंग उसका कॉम्प्लिकेशन होता है, उसके अकॉर्डिंग उसका सिम्टम्स प्रेजेंट होता है. सो व्हाट आर द सिम्टम्स प्रेजेंट? सपोज द कंटेंट ऑफ द Meckel's diverticulum is heterotrophic gastric mucosa. Then with time there can be chronic peptic ulcer disease, and if there is peptic ulcer perforation, there will be features of peritonitis. If colon is the content of the diverticulum, then there can be features of acute intestinal obstruction like constipation, like pain abdomen, distended abdomen. If pancreatic tissue is a part of the Meckel's diverticulum, then acute pancreatitis हो सकता है. और दो फीचर्स होता है जो आपको जानना पड़ेगा क्या क्या हो सकता है. If Meckel's diverticulum is itself a part of the hernial sac, तो Leiter's hernia हो सकता है. And one more important thing is कि Meckel's diverticulum can also have features of acute appendicitis. ठीक है, inflammatory group के अंदर वो पड़ता है, which can be either diverticulitis or gangrene हो सकता है. तो acute appendicitis का features present होगा. Now these features which I've told you can also be said as a complications of Meckel's diverticulum. So if someone asks you what are the complications of Meckel's diverticulum, what will you say? Sir, the complications of Meckel's diverticulum can be chronic peptic ulcer, which can be presented with perforation. Sir, acute appendicitis. Sir, acute intestinal obstruction. And it can also be umbilical fistula or a granuloma. These are the complications of Meckel's diverticulum. Now what you have to know, what are the congenital anomalies associated with Meckel's diverticulum? So you should remember at least 3. One is anorectal fistula, one is cardiac and nervous complications, and third is esophageal atresia. Okay, these 3 are the congenital anomalies associated with Meckel's diverticulum. Now, what investigations will you do? So first हम लोग करते हैं एक small bowel enema with contrast. Small bowel enema with contrast. इससे मेरे को पता चल जाएगा Meckel's diverticulum. दूसरा हम लोग करते हैं 99M pertiginate scan. 99M pertiginate scan. So ये दो चीज़ क्या होता है, enema and pertiginate scan. Now, how will you treat the case of Meckel's diverticulum? So if the patient is asymptomatic, you don't have to do anything. But if the patient is symptomatic, ठीक है, then the operation that you do is Meckelian diverticulotomy with the resection of a segment of small intestine. Meckelian diverticulotomy. But suppose if you have accidentally found out Meckel's diverticulum, what will you do? You have to do excision of the diverticulum only if the mouth of the diverticulum is short or it is narrow and the wall is thickened. अगर wall thickened नहीं है और अगर narrow mouth नहीं है, wide mouth है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है. You will only remove it, you will only excise the diverticulum only when the mouth is narrow and the wall is thickened. बाकी प्रोसेस का नाम है Meckelian diverticulotomy. This is all about the video of Meckel's diverticulum. वो क्या होता है, क्यों फॉर्मेशन होता है, is it true or false diverticulum, what is the rule of 2, what are the congenital anomalies associated with Meckel's diverticulum, what are the complications, accordingly what are the features that the patient will present with. आप उसको investigate कैसे करोगे और उसको treat कैसे करोगे. That's all about Meckel's diverticulum.